Hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani here from SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. Okay, Smriti ma'am is here. Ramnik ji, all good. Great. So we'll just wait for a couple of minutes because I see that people are joining in. So we just start in another 2 minutes or so. Girish ji, hello. Yes, Prithvipal ji. Arul ji is saying, will I get a permanent video after this webinar? Yes. So, all these webinars are available on our YouTube channel, Arul ji. So if you go to SBI Securities YouTube channel, you will see a tab by the name Live. So you click on Live and you can see all the webinars there. Great, Sunil ji. Visible and audible saying Amit ji, Sudhir ji saying yes. Prithvipal ji is saying first timer, no problem, Prithvipal ji. So how many of you all, so as you all already know, so the topic for today is going to be, how do we use RSI to spot reversals? So the core topic is going to be RSI. I mean, it is not going to be a theory session, guys. So we'll be doing a lot of, so it's going to be a trading strategy based. So it is going to be a lot more practical and actionable rather than theory. So first we'll talk about what RSI is. फिर हम लोग देखेंगे कि RSI में एक divergence का एक concept होता है. We'll understand what divergence is. And thirdly, we will also see how do we combine RSI with trend lines to spot reversals. Ideally, where should be your entry, where should be your stop loss, where should be your exit, what is the time frame that you should be looking at, what are the charts that you should be looking at, etc. And towards the end, we also have a Q&A session. It will be more of a quiz wherein I just keep the charts in front of you and you have to identify if your whatever we learn in the next 30-40 minutes, if you are able to identify whatever is being taught here. So next one are this is what we will be discussing. Okay. Okay, so before we start off with the session, guys, so how many of you all are actually aware of what an RSI is? If you all can let me know in the chat box. Parik ji, it can be used in option as well. Options में कर सकते हो, cash में कर सकते हो. Again, it depends on chart में आपको apply करना है. Then it depends on आपको कहाँ पे trade करना है. Options में करना है, futures में करना है, cash में करना है. It's up to you. Sir, you should be conducting trading webinar. Ramnik ji, I do webinars every Wednesday on different topics. I've been doing since last 2 months. My colleagues have been doing it. I guess you're attending it for the first time, but no problem. I mean, you can attend on all the Wednesdays. We have some webinars on Tuesdays lined up as well. ठीक है, Smriti ji saying I'm using it regularly. Okay, great. Ramnik ji saying RSI, perfect. Ramnik ji, that is exactly what an RSI is. Amit ji saying RSI, relative strength index. RSI, I'm aware. Great, guys. I think pretty much all of you guys are aware of what an RSI is. Superb. So we learn what an RSI is first. फिर हम लोग देखेंगे कि RSI को interpret कैसे करते हैं. Yes, Satish ji, I'll talk about that. Then we'll understand one important concept of RSI, that is divergence. And then we will see कि आप ये divergence रख के reversals को कैसे identify कर सकते हैं. So these are the things that we will cover in the webinar. Okay. Now basically RSI क्या होता है? जैसे काफी सारे indicators है. I hope you all are able to see my screen. I hope मेरा जो presentation है that is visible. So we'll understand the concept. फिर मैं आपको charts में भी लेके जाऊंगा. Then we will look at examples as well. So don't worry about that. So be rest assured, we'll cover everything. फिर भी आपको ऐसे कुछ लगता है कि कुछ मिस हो गया, if you want to ask anything, you can keep your questions ready with you, and towards the end I'll take your questions. In between also I'll be taking your questions as and when it is needed. ठीक है. I hope you all are able to see my presentation, guys. If you all can let me know in the chat box. So if you all can just quickly let me know, guys. So RSI, so जैसे बहुत सारे indicators that are available out there, जैसे moving average हो गया, Bollinger Bands हो गया,
आपके सुपर ट्रेंड हो गए, वीवैप हो गए। सिमिलरली एक इंडिकेटर है जिसका नाम है RSI। नाउ RSI का जो फुल फॉर्म है दैट इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाउ बेसिकली इट इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? मोमेंटम इट्स बेसिकली इट शोस कि जो करंट जो प्राइस है उसका स्ट्रेंथ क्या है। इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस की जो प्राइस जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है प्राइस का वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या बेसिकली आपको ये बताता है कि जो प्राइस का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। Secondly, like I just said, it measures the speed and change of the price movement. So that is what an RSI is. Now, can anyone tell me RSI को किस लिए यूज किया जाता है? How do you use RSI for your trading? क्या आपने बोला है कि RSI is your relative strength index? I'm pretty sure आपने भी RSI यूज किया होगा। आप कैसे RSI को यूज करते हैं? अगर आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हो। If you all can let me know how do you all use RSI guys? आप कैसे RSI को आप कैसे यूज कर? Very good. Smriti ji is saying overbought and oversold. Absolutely. What about others guys? I want everyone to participate. I think let's keep the session interactive. Let's keep it engaging. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ। टू वे रखेंगे तो ही मजा भी आएगा। If RSI is below 30 then it is oversold. Yes, Ramnik ji. Oversell, overbought. Okay, great, super, very good guys. I think you all know. So RSI is an oscillator. जैसे आपको पता होगा एक ओल्डन टाइम्स में एक पेंडुलम क्लॉक होता था। हर एक घंटे के आफ्टर एवरी 1 आवर एक आवाज आता था उसमें टंग 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 करके। इफ यू सी दैट इज बेसिकली एन ऑसिलेटर। सो सिमिलरली RSI इज आल्सो एन ऑसिलेटर दैट oscillates between 0 to 100। बेसिकली उसमें अभी तरह तरह के रीडिंग्स ओके, सिंस इट ऑसिलेट्स बिटवीन 0 to 100 उसमें अभी कुछ लेवल्स डिफाइन करके रख दिए है कि जैसे ही वो RSI 70 के ऊपर जाता है उसका मतलब है कि अभी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो गया है। चांसेस आर दैट अब प्राइस शायद ये नीचे आ सकता है। सो जब 70 के ऊपर चला गया तो वी कॉल इट एज एन ओवरबॉट जोन। सिमिलरली वही RSI जब 30 के नीचे आ जाता है वी कॉल इट एज एन ओवरसोल्ड जोन। इसका मतलब अभी काफी गिरावट आ गई है प्राइस में एंड चांसेस आर दैट द प्राइस कैन राइज फ्रॉम योर। नाउ क्या कॉम्बिनेशन सही है RSI के लिए? नाउ यू वुड हैव सीन सम पीपल यूज 70 एंड 30। अबव 70 ओवरबॉट, बिलो 30 इट इज ओवरसोल्ड। आपने देखा होगा कोई कोई लोग 60-40 भी यूज करते हैं कि 60 के ऊपर चला गया तो ओवरबॉट है या 40 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड है। देयर आर सम पीपल हु यूज 80-20 एज वेल, एकदम एक्सट्रीम कि 80 के ऊपर चला गया तो इट्स ओवरबॉट या 20 के नीचे चला गया तो इट्स ओवरसोल्ड। आई थिंक वी आर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ कि हमें क्या नंबर रखना चाहिए। एज यू कैन कीप 70 एंड 30 जो स्टैंडर्ड RSI का है, यू कैन यूज दैट 14 पीरियड RSI। And anyway, post above 70 you can probably call it as an overbought zone, and below 30 you can call it as an oversold zone. So you don't have to change any figures with that. Anyway, we are not going to use it for to identify whether it's overbought or oversold, because there is much more to RSI than just looking at overbought and oversold levels. Okay, so this is basically what RSI is. So if I am looking at the paint here, so let me do one thing. Let me open up my chart. I hope you all are able to see the chart on my screen. I use 60 and 40. Yeah, no problem, Rajendra ji. So any combination that you use is fine, because जो concept अभी हम लोग सीखेंगे divergence का, that is going to be different than overbought and oversold. सो यहाँ पे आप देख रहे हो नाउ कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम दैट यू आर कंफर्टेबल विद गाइस। अगर आपको इंट्राडे आप कर रहे हो, आपको 5 मिनट में करना है, यू कैन यूज इट ऑन अ 5 मिनट्स चार्ट। इफ यू फील आपको 15 मिनट्स चार्ट में करना है, यू कैन यूज इट ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट। or if you feel that you are a swing trader, you want to use it on a higher time frame, let's say a 1 hour chart or a 30 minutes chart or a 4 hour chart, you can do that। या आपको डेली चार्ट में यूज करना है, यू कैन डू दैट एज वेल। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम में लगाना चाहिए। irrespective of the time frame that you select, the concept of the divergence remains the same। now from where do we get this RSI? so यहाँ पे चार्ट है, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखते हो, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में जाके ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप RSI, और जैसे आप RSI टाइप करोगे यहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिख जाएगा। एट द मोमेंट यू आई क्लिक ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हियर, एकदम आप देखोगे चार्ट के एकदम बॉटम पर
you will see an RSI indicator. तो यहाँ पे आप देख रहे हो RSI 14. So the 14 period का RSI है. We don't have to change any settings here, guys. Satish ji, I'll come to that part. So यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये RSI इंडिकेटर आपको दिख रहा है, I'll just click on settings. आपको दिखेगा एक येलो लाइन भी है, दैट्स योर मूविंग एवरेज लाइन. यू डोंट वांट दैट मूविंग एवरेज लाइन. तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टाइल में जाके आई विल जस्ट अनटिक इट. हम लोग क्या करेंगे, वी विल फॉलो 70 एंड 30. तो मैं 70 को यहाँ पे दे देता हूँ एक अलग से कलर दे देता हूँ, रेड. I don't want 50, but I'll keep 30. I'll keep the color as green here. So, okay, so this will be. So my upper band is 70. So 70 is what we are going to use, and my lower band is 30. And I'll click on OK. Simple. अच्छा, so this is my dotted line. So what I'll do is इसको भी मैं एक straight line कर देता हूँ यहाँ पे. Okay, just a second. Done. So understood, guys. How do we use an RSI? How do we apply RSI on a chart, guys? So although for the first timers here, तो वेरी सिंपल है. आपको बस चार्ट ओपन करना है. यू हैव टू ओपन द टाइम फ्रेम दैट यू वांट टू. आइडियली अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आई वुड से यू कैन स्टिक टू अ 5 मिनट चार्ट. डोंट गो फॉर 1 और 3 मिनट्स, बिकॉज फिर वो बहुत ही आपको एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी दिखेगा. आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तब तक. फॉर इंट्राडे आई थिंक 5 मिनट्स इज कंप्लीटली फाइन. अगर 1 से 2 दिन का आपका कुछ पोजीशन आपको होल्ड करना है तो यू कैन लुक एट 15 मिनट्स एज वेल. But if you are a swing trader, you can probably look for the same signals on a 30 minutes chart or a 1 hour chart or a 4 hours chart as well. ठीक है. So ये आपका हो गया RSI. Now, do you think by just relying on overbought and oversold, should you be trading RSIs, guys? Do you think RSI, trading is just easy with the help of overbought and oversold levels? क्या हमें ऐसे यूज करना चाहिए with the help of overbought and oversold level, guys? If you all can let me know in the chat box. So for example, let's say this is your RSI and let's say this is your 70 levels, and the moment the price goes above, and the moment the RSI goes above 70, basically it indicates RSI. Yeah, you can use either of them, but the indicator that we are using, Smriti ji, is your RSI here. So above 70 is overbought. मतलब imagine life would have been so simple, right? 70 के ऊपर गया, चलो मतलब अभी स्टॉक गिरने ही वाला है, अभी इसको हम लोग सेल कर देंगे. और let's say if it goes below 30, right now it's going to be oversold here. चलो now अभी काफी गिर गया है. Chances are that the price is going to rise from here. That is very basic level of using RSI, guys. I mean, हो सकता है 10 में से शायद 3 या 4 ट्रेड सही में चला गया, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, RSI 80 या 70 के ऊपर भी जाएगा, बट RSI will start falling, but the price will still remain there. I am pretty sure you would have seen that. कि ऐसा नहीं कि RSI तो गिर जाएगा 70 के बाद जाके, बट chances are that the price might still remain above 70 or above 75 levels for a long period of time. So it's not that. और ऐसा भी हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे कि हाँ चलो 60 के ऊपर गया तो हम लोग खरीद लेंगे और 40 के नीचे गया तो हम लोग बेच देंगे. That is not what we are going to cover in today's session. So this is one way of looking at it. इससे चलो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि चलो 70 के ऊपर है तो you have to be like slightly cautious now and don't be very over aggressive with the stock in terms of buying that stock. तो आप देख सकते हो कि चलो अभी 70 के ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रेंथ वीकन हो रहा है, देन चांसेस आर दैट यू माइट नॉट गो and aggressively buy that stock. And similarly 30 के नीचे you know that the stock has already fallen a lot, chances are that you might probably hunt for some reversal entries at the bottom rather than looking for some sell entries here. ठीक है. So this is how one way to look at RSI is. Now the thing that we are going to learn and what is going to matter to us is a concept which is called as divergence, guys. Now can anyone tell me how many of you all are aware of this concept which is called as divergence? How many of you all are aware of RSI divergence, guys? If you all can let me know in the chat box. I think Smriti ji is saying I know. What about others, guys? How many else here knows about what a divergence is? Now just
Okay, for the ones who don't know about RSI divergence, it's completely fine. But what we will do here is just a second. Now can look at the price chart and look at the RSI movement here, guys. Can you all tell me how is the movement of RSI with respect to price? If you all can give me an answer in the chat box. क्या RSI प्राइस के साथ साथ वही डायरेक्शन में मूव होता है या ऐसा भी होता है कि कभी प्राइस ऊपर जाता है और RSI नीचे जाता है? I'll come to that part, Vaidik ji. I'll tell you, I'm talking about the strategy, but I'll go from the basics and then to advanced. Now, if you see the RSI and the price movement here, guys, अभी आप देख रहे हो जब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, you can see that RSI also starts going up. जब प्राइस एक साइडवेज रेंज में रहता है, आप देख रहे हो कि RSI भी एक साइडवेज रेंज में होता है. When you see that the price is falling, you see that the RSI is falling as well. So most of the times what happens is the RSI जो है it moves in tandem with the price. Moves in tandem मतलब प्राइस ऊपर RSI ऊपर प्राइस नीचे RSI भी नीचे. बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्राइस एक तरफ जाता है, मतलब लेट्स से द प्राइस गोज अप but at the same time the RSI also doesn't go up at the same time. The RSI moves in an opposite direction. Similarly, the price goes down. Rather than RSI going down, the RSI probably hints at कि RSI भी उतना lower lows नहीं बनाता है. The RSI slightly goes up and that leads to something which is called as divergence, guys. Now there are two types of divergence. Okay, the first type of divergence that we are going to see is called as a bullish divergence. Okay, and the next divergence that we are going to see is called as bearish divergence. No, Satish ji, we don't have to depend on the volumes as well. Just focus on the concept of divergence here. Okay. Now, first, let me explain you the concept of divergence, guys, and then I will go to the chart and explain to you on chart here. Okay. Okay, can everyone see the chart on my screen? Now, this is the Nifty daily chart on my screen here. Now, the first concept that we are going to look at is the concept of a bullish divergence. Now, what happens in a bullish divergence is you see that, can you see this price here, the price point A? यहाँ पे price ने एक low बनाया और वहां से ऊपर चला गया, and then again price came down, and can I say it broke past the previous low here. So if you look at point A and point B, so I have a new low and this is my previous low here. So if I connect these two lows, can I say I am getting a lower low formation यहाँ पे? I want everyone to answer, guys, in the chat box. मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, प्राइस का जो ये सेकंड लो है, can I say that is even lower than the first low? So that's a lower low formation which the price has formed here. अब आइडियली जब मैं RSI भी देखता हूँ ना, तो RSI में भी एक लोअर लो दिखना चाहिए फॉर दैट सेम पीरियड. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया है, सो हियर यू कैन सी RSI also has made a low, then the RSI has gone up and the price has gone up as well. Now I see that the price has come down, the RSI has also come down here, guys. But do you see that the second low of RSI, is it lower than the first low? Or is the second low of RSI higher than the first low here, guys? If you all can let me know in the chat box. Do you see there is a divergence here? The price has made a lower low. That means the second low of price is even lower than the previous one. But when I do the same thing on RSI here, you see that ये जो RSI का जो second low है, वो first low है, जो A point है ना, उसको breach नहीं किया है. Had it breached, then it would have been exactly similar. मतलब price भी lower low है, RSI भी lower low है. But यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक divergence दिख रहा है where the price has made lower low, but at the same time you see that the RSI has made higher low. मतलब ये जो second low है, it is higher than the first one. Now this is called as a bullish divergence. इसका मतलब है कि प्राइस तो लोअर लो बना रहा है, बट RSI is hinting कि हो सकता है कि ये जो करंट डाउनवर्ड जो मूवमेंट है यहाँ पे प्राइस का, वो शायद द प्राइस इज लूजिंग मोमेंटम and there are high chances that the price can reverse from this point here.
हो बुलिश डाइवर्जेंस का इंडिकेशन ये है कि हो सकता है वी माइट नॉट सी अ न्यू लो अगेन and chances are that the price might reverse its trend and go up from here. अब तक मैं एंट्री पे आया नहीं हूं, जस्ट अंडरस्टैंड द सिग्नल फॉर नाउ, आई विल टॉक अबाउट एंट्री लेटर. Understood what a bullish divergence is, guys? If you all can let me know in the chat box. Let me know, guys, in the chat box if the concept of a bullish divergence is clear, guys. So the what happens in a bullish divergence is the price is making lower lows while the RSI is making higher lows. मतलब price का जो second low है that is lower than the first low, but जो RSI का जो second low है that is higher than the first low. But remember you guys, यहाँ पे मैंने क्या किया है, you see यहाँ पे मैंने जो प्राइस का जो लो पॉइंट्स है ना उसको मैंने कनेक्ट किया है. तो सिमिलरली अगर आप प्राइस का लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो तो आपको आरएसआई का भी लो पॉइंट से कनेक्ट करना है. सो वन मिस्टेक दैट आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल डू व्हेन इट कम्स टू स्पॉटिंग डाइवर्जेंसेस, प्राइस का तो लोस को कनेक्ट करते हैं बट आरएसआई का हाईस को कनेक्ट करते हैं. डोंट डू दैट. अगर आप प्राइस का दो लो पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो आरएसआई का भी दो लो पॉइंट को ही आपको कनेक्ट करना है. इज दैट पार्ट क्लियर? नाउ दिस इज व्हाट अ बुलिश डाइवर्जेंस इज. नाउ exactly when the price makes lower lows and the RSI makes higher lows. Now what is a bearish divergence, guys? Bearish divergence is exactly opposite of a bullish divergence here. Bearish में क्या होता है, here the price ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, then the price again started its upward journey here. Now what I see here at B point is the price has made a new high. और ये जो न्यू हाई है दैट इज इवन हायर देन द प्रीवियस हाई ईयर. तो यहाँ पे क्या हो गया, कैन आई से दैट द प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज ईयर? व्हाई आई से हायर हाइज इज बिकॉज द सेकंड हाई ऑफ द प्राइस इज हायर देन द फर्स्ट हाई. अब यहाँ पे मैं लो पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अप ट्रेंड पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं दो हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ. आई एम कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड आई एम कनेक्टिंग पॉइंट बी वेयर द सेकंड हाई इज हायर देन द फर्स्ट हाई ईयर. Do you all agree that the price is making higher highs? If you all can give me a heads up in the chat box. I want everyone to give me a heads up, guys, in the chat box. So the price is making higher highs here. I hope everyone is with me. Is that clear, guys? Yes, superb, great. Abhishek ji, Dinesh ji. Now at the same time, just see the bottom of the chart here where I have marked RSI. अब जब प्राइस ने फर्स्ट हाई बनाया तो आप देखो आरएसआई का भी यहाँ पे हाई है, बट जब प्राइस ने एक सेकेंड हायर हाई बनाया यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई सी इज आरएसआई उतना ही तेजी से नहीं बढ़ा था जितना प्राइस से आपका बढ़ा है यहाँ पे. वेयर द प्राइस हैज मेड अ हायर हाई, here if I am connecting the two high points of price, so here I have connected the two high points of RSI here. The second high of RSI is lower than the first high. तो यहाँ पे प्राइस आपका हायर हाइज बना रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका जो RSI है दैट इज मेकिंग लोअर हाइज योर. सो व्हेन दिस थिंग हैपेंस, दिस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस is called as a bearish divergence. Understood the difference between bullish and bearish divergence, guys? If you all can give me a heads up in the chat box. All good until now? Okay. So हमने क्या देखा था bullish divergence पे? Let's say the price, so this is point A and this is point B. So can I say here the price is making lower lows and at the same time this is point A and this is point B. Here the RSI, so imagine this is your price and this is your RSI. At the same time your price is making higher lows. What type of divergence is this, guys? जहाँ पे, so imagine you have to connect the low points and the low points of RSI and the low points of price for bullish divergence. ऐसा नहीं कि इसका दो low point connect कर दिया और इसका high point connect कर दिया. So when the price is making lower lows and where the RSI is making higher lows, it indicates a bullish divergence and it means chances are that the price can cut its downtrend and it can start moving up from here. That is what a bullish divergence is.
Now, what is a bearish divergence? Where the price is making a higher high. So here you can see if I connect these two high points here, which is A and B, here the price is making a higher high. So this is my price chart. Similarly, if I look at the RSI here, so this is how my RSI is looking like. So if I connect these 2 points here, which is A and B, this is making a lower high here. So price is making higher highs where the RSI is making lower highs. So here I connect the low point, I have connected the low points, here I have connected the high points, here I have connected the high points here. So when this happens, this is a bearish divergence. It means bearish divergence, it means हो सकता है कि ये शायद जो करंट अप ट्रेंड है वो उसमें वीकनेस नजर आ रही है और हो सकता है कि प्राइस यहां से अब नीचे जा सकता है. अंडरस्टूड गाइस व्हाट इज नॉर्मल. फर्स्ट हमने देखा कि नॉर्मल आरएसआई का रीडिंग कैसे होता है. अबाउ 70 ओवरबॉट, बिलो 30 इट इज ओवरसोल्ड. देन वी लर्न अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस. अभी दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं. एक टू आइडेंटिफाई बुलिश रिवर्सल्स, वन इज टू आइडेंटिफाई बेरिश रिवर्सल्स. So when price makes lower low and your RSI makes higher lows, that's bullish divergence. Chances are that the price can go up. Similarly, if the price makes higher highs, RSI makes lower highs, it is a case of bearish divergence. Chances are that the price can go down from here. ये तो दो पार्ट है, but there is one more part that we are going to use here, which is now how to spot reversals. Now tell me guys, अभी now bullish divergence, you know, it is very clear कि ठीक है अभी बुलिश डाइवर्जेंस है तो चांसेस है कि प्राइस ऊपर चल जाएगा. नाउ क्या जैसे डाइवर्जेंस मिलते ही हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं? विल दैट बी अ गुड ऑप्शन और डू वी नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन एज वेल? सी एट द एंड ऑफ द डे RSI इज एन इंडिकेटर. यू कैन जस्ट सोलली रिलाई ऑन एनी इंडिकेटर. योर इंडिकेटर सिर्फ आपको एक हेल्प करने के लिए, बट ऑलवेज मोस्ट जो एम्फोसिस है जो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए काफी जो क्रूशियल है, दैट इज यू हैव टू लुक एट द प्राइस एक्शन एज वेल. सो after the divergence guys, after you get a divergence signal, can you all tell me, can we directly enter into a trade by just spotting divergence signals? If you all can let me know in the chat box. चलो आपको अभी डाइवर्जेंस दिख गया है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल यू स्पॉट अ बुलिश डाइवर्जेंस और यू स्पॉट अ बेरिश डाइवर्जेंस हियर, बट माय क्वेश्चन इज वेयर डू यू एंटर? बिकॉज हो सकता है कि चलो आपको एक आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल गया, द प्राइस इज फॉलिंग, RSI इज गोइंग अप, चांसेस आर दैट इट माइट टेक सम टाइम बिफोर इट गोज अप. और यू गेट अ बेरिश डाइवर्जेंस, यू आर वेटिंग कि नाउ अभी फॉल होगा, बट चांसेस आर दैट वो फॉल थोड़े टाइम के बाद होगा. सो यस, डाइवर्जेंस गिव्स यू सम हिंट्स. आपको एक हिंट पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है नाउ अच्छा डाइवर्जेंस है, तो इट्स जस्ट दैट यू शुड टेक अ बैक सीट एंड सी कि हाँ कि इसके साथ मैं और क्या देख सकता हूँ यहाँ पे. So technically what I do is, or the thing that we are going to do is, we are going to use something called as trend lines along with RSIs. Now, how many of y'all are aware of this concept of trend lines? And trend lines के साथ आप कैसे एक अच्छा रिवर्सल को आप ढूंढ सकते हो? Are you all aware of trend lines, guys? If so, you always have to combine RSI divergence with a trend line to spot reversals. And don't worry, इसके बाद हम लोग examples ही देखेंगे. This is the last part of the concept. And once the concept is done, guys, I will take you to the example part, and then we will start with the quiz here. Yes, you see whether the price is bouncing from a support. Yes, that can be one option. If you have a knowledge of candlesticks, if you feel there is a good candlestick formation after a bearish divergence or a bullish divergence, that is one extra confirmation. Yes, Smriti ji, like support and resistance to hai. Okay. Now, how do you identify if a trend has changed or not? Now, one of the way to identify is to use a trend line. Now, what is a trend line? Let's say the price is moving up like this. What is the trend of the price, guys? If you all can let me know in the chat box. So this was the first part. This is the second part. And now we are discussing the third part here. So here you can see this is the price here. The price started from here, up, down, up, down, up, down, and up here. So we can clearly see that the price is an uptrend. Okay. Now what I do is, so जब भी price एक uptrend में है, so can I say I will connect the low points of the price?
सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे मैं एक लाइन स्टार्ट करूंगा एंड आई विल कनेक्ट द लो पॉइंट्स ऑफ द प्राइस हियर. सो आई विल कनेक्ट दिस लो पॉइंट, आई विल कनेक्ट दिस लो पॉइंट हियर. आई जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिकॉज आई नो कि हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से वो लाइन पर आए, सपोर्ट ले और फिर से ऊपर जाए. बट टेल मी गाइस, द मोमेंट इट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन, व्हाट डज दिस मीन हियर? यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन आ गया है. सो दिस इज योर ट्रेंड लाइन and you have got a breakdown here. You see the price took support, it went up, price took support and went up, price took support and went up. Finally it didn't take support here, but it broke the support here. आपने the whole purpose of doing a trend line is to see कि हर टाइम वो ट्रेंड लाइन में प्राइस आएगा, बाउंस होएगा, प्राइस आएगा, बाउंस होएगा, प्राइस फिर से आएगा, बाउंस होगा. बट फोर्थ टाइम क्या होगा, यहाँ पे फाइनली वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया. दैट मीन्स chances are that upward momentum is losing steam और यहाँ से प्राइस गिर सकता है. Is there any time frame to measure? See, there is no particular ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बट देयर हैज टू बी अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन द टू. मतलब वो डाइवर्जेंस एकदम विजिबल होना चाहिए. सो व्हेन आई ओपन द चार्ट्स राजेंद्र जी, आई थिंक दैट टाइम इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि आपको कैसा देखना है. Exactly. So when there is a trend line breakdown, that is when you know that the trend has possibly reversed from here. Similarly, this is the price chart, and let's say this is how the price is moving. Now, what is the trend of the price here, guys, at the bottom? यहाँ पे हमने अप ट्रेंड में देखा है. सो अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, लोज को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे. सो दिस इज द लो पॉइंट हियर. So I have connected this low, I have connected this low. Finally, it broke down here. And chances are that now that it has broken the trend line, the price can fall from this level. While drawing the trend line, should we consider you can consider low to lows, Direshji. But okay, even if you consider close, that's fine. But usually trend lines are drawn by connecting the low points. Usually I use timeline on how long I want to stay invested. Achha, you are saying you are using trend lines for that. Yeah, that's okay. Perfect. Now the price is in a downtrend. So what I do is when the price is in a downtrend, all the high points is this. So I will draw a trend line by connecting these high points here. So these are my trend lines. Correct? So this is my high point, this is my high point, this is my high point. I connect my trend lines here. The moment the price breaks above the trend line, what does this indicate, guys? If you all can give me a heads up in the chat box. The price is moving down. The price has taken resistance here. There's another resistance here. And yes, now we can see a reversal here. Superb. So whenever we are, you see, देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, वो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था, बट अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर चला गया. तो चांसेस आर दैट द प्राइस कैन go up from here. That is what it beats. Correct? Superb. Great. Satish ji is saying reversal. Great. Now let's do something. Let me open up a new paint here, and now let's do something. Now what we will do is, now we are going to combine RSI plus a trend line to spot a reversal. So let's do one thing. So bullish divergence में क्या होता है? Can I say the price moves higher? At the same time, जो RSI है, that moves lower. The price moves in a higher high formation. RSI moves in a lower high formation. So this is my price and this is my RSI. Now, what is this signal, guys, where the price is making higher highs and my RSI is making lower highs? What is this signal called as? We just discussed that. If you all can let me know in the chat box. Is this a bullish divergence? Yes, it is a bearish divergence. Now, what we will do is, along with the divergence, ये जो low point, so for example, ये आपका low point है, we will also draw a trend line along with it. और ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, रिमेंबर गाइस, दिस ट्रेंड लाइन डजंट हैव टू बी स्टीप. इसका मतलब है ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं होना चाहिए या एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए. Whenever you get a trend line in a 45-degree angle, that is much better. मतलब एकदम से ऐसा स्टीप वाला ट्रेंड, कोई कोई लोग ऐसे एकदम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. आई डोंट वांट अ वेरी स्टीप ट्रेंड लाइन. Ideally, if you get a trend line in a 45-degree angle, ऐसे वो वाला trend lines is what you need to see. So for example, here you see the trend line is in a 45-degree angle. So you get a divergence. The moment the trend line gets broken,
because here you already have an RSI bearish signal. Now all you want is the second signal is the trend line to get broken here. तो दो चीज हो सकता है, ब्रेक करके यहाँ से नीचे जा सकता है या फिर से ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे जा सकता है. दिस इज पॉसिबिलिटी 1 and this is possibility 2. Exactly. So unless and until after you get a divergence signal, unless and until the trend line is not broken on the downside, you won't take a trade in the first place. Is this part clear, guys? If you all can let me know in the chat box. Understood? When do we actually take an entry and how are we combining trend lines and RSI? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? स्मृति जी saying clear. What about others, guys? If you all can let me know in the chat box. Any time frame, अभिषेक जी, whether it's 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, आप जो टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, आप जो टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस देख रहे हो, उसी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करना है. And similarly, now what we will do is, let's say the price has made a lower low while the RSI has made a higher low here. So price has made lower lows, RSI has made higher lows. Now, can I take an entry at this bottom itself? Is this the right entry? So this is a case of a bullish divergence. So this is a case of bullish divergence where the price is making lower lows while the RSI is making higher lows here. यहाँ पे तो सिर्फ divergence signal मिला है हमें. Let's say I draw a trend line by connecting the highs here. Should I take entry at this bottom itself? The moment I spot a divergence signal, क्या मैं यहीं पर entry ले लूं? Will that be right? हाँ, यहाँ से ऊपर चल गया तो अच्छा है, because your entry एकदम bottom पे हो जाएगा. Chances है कि शायद आपका अच्छा trade यहाँ पे मिल जाए. बट हो सकता है कि रिवर्सल आए नहीं तो यहाँ से वो एकदम से नीचे चला जाएगा. एग्जैक्टली. सो यू वेट फॉर द प्राइस टू गो अप. जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद भी थोड़ा रुक सकते हो. सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. इधर इट विल ब्रेक द ट्रेंड लाइन एंड गो अप स्ट्रेटली, या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा रीटेस्ट देगा ट्रेंड लाइन पे एंड देन इट विल गो अप. सो इधर पॉसिबिलिटी 1 एंड देयर इज दिस पॉसिबिलिटी नंबर 2 हियर. So when you get an RSI divergence signal, ensure that you get a trend line breakout or a trend line breakdown as well. Very good, Smriti ji. So break line and make it support. Superb. Is this part clear? So Ramnik ji, iska ulta hai. So this is RSI higher highs. This is my lower highs. तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा. आई वोंट एंटर हियर, बट द मोमेंट इट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन हियर, दिस इज वेयर माय सेल एंट्री वुड बी. And this is where my buy entry would be. Is that part clear, guys? If you all can let me know in the chat box. Okay. Chalo. Now let me see. So I'll show you one example before we move to the examples here. So can you all see the daily chart of Mahanagar Gas here? Should the trend line breakout be with volume? Ideally, if you get a trend line breakout with volume, Dinesh ji, yes, you can definitely use it to your advantage. It will be better if you can. But even if you don't get volume alongside breakout, it's completely fine. It's just that the trend line should be broken because you already have a divergence signal here. But हाँ, अगर वो break करता है volume के साथ, तो आपका conviction और बढ़ जाता है. That's the only thing here. Now look at the chart of my Mahanagar Gas, guys. So here what has happened is, so this is the daily chart. If you remember, Mahanagar Gas एक अच्छा uptrend में था. फिर वो बीच में पता है एक हाल ही में, अगर 6-7 महीने पहले, लास्ट अक्टूबर नवंबर में, वो गैस एलोकेशन का कुछ न्यूज आया था महानगर गैस में, जहाँ पे उनका वो गैस एलोकेशन कुछ कम होने वाला है. देयर वाज वन न्यूज दैट हैड कम इन महानगर गैस. नाउ इफ आई लुक एट द डेली चार्ट एट दैट टाइम, you can see that the A, B and C, the price was making new highs. Every time the new high was higher than the previous one. But if I look at the RSI, every time the price was making higher highs, the RSI was making lower highs here. The B is lower than the A point, C is lower than the B point. And when the price was making higher highs, what I did was, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैंने trend line draw किया. You can see the trend line is in a 45-degree angle. You can see the purple line here. And the moment this trend line broke, you can see the trend line broke here. There was a slight retest to that trend line. You can see this green candle and the red candle besides that. And from that point, और यहाँ पे जिस दिन gap down हुआ था ना, उस दिन news आया था. And then फिर से news आया था यहाँ पे. So now if you have already seen the chart, and when you have to see whether the news is a positive news or a negative news,
अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, ऑलरेडी अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर कोई पोजीशन रखे हो एंड यू सी अ डाइवर्जेंस ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट, दैट इज अ डेली चार्ट, दिस कैन बी अ गुड एग्जिट पॉइंट फॉर योर एग्जिस्टिंग पोजीशंस गाइस, बिकॉज यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया प्राइस तो हायर हाई बना रहा है बट आरएसआई इज लूजिंग स्टीम, और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी मिल गया, 45 डिग्री एंगल ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, एंड यू कैन सी यहाँ से नीचे चला गया। सो दिस कुड बी अ गुड एग्जिट पॉइंट अगर आपको कुछ आपके होल्डिंग से निकालना भी है। अपने महानगर गैस ऑलरेडी मान लो आपने महानगर गैस यहाँ पे खरीदा हुआ है, आप देख रहे हो उसको कब बेचू, जैसे ही कुछ आपको एक रिवर्सल साइन मिल गया है, दैट इज द टाइम दैट यू कैन consider exiting, but that is when you do it on a higher time frame, let's say on a daily chart or a weekly chart or a monthly chart, etc. There was some news on gas allocation जो cut हो गया था यहाँ पे, you know, for all the gas stocks, if you see all Mahanagar gas, your Indraprastha gas, all these gas stocks were down. I think this happened last October November. वो कुछ गैस का जो अलोकेशन था वो कम हो गया था, एंड थोड़ा फाइनेंस उसका फंडामेंटल्स में देयर वुड हैव बीन, यू नो, सम हिट ऑन देयर numbers as well, and that we could see on the price chart here as well. Understood guys how we are going to use RSI to spot reversal? So we are looking at, अगर bullish divergence है तो trend line breakout चाहिए, और अगर bearish divergence है we need a trend line breakdown. All good until now? If you all can give me a heads up in the chat box. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस, आप एक बार मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स पे। सो जो कॉन्सेप्ट हमें समझना था कि आरएसआई कैसे यूज करते हैं अबव 70 बिलो 30, दैट इज द बेसिक पार्ट। देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ बुलिश डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज अ बेरिश डाइवर्जेंस। देन वी अंडरस्टूड कि वो बुलिश डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। देन वी सॉ कि ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग कैसे डाइवर्जेंस को ट्रेंड लाइन के साथ मिलके एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो इज एवरीवन रेडी फॉर द क्विज नाउ? सो अभी पता चल जाएगा। सो आई विल कीप 3 चार्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू स्पॉट डाइवर्जेंस सिग्नल्स, एंड लेट्स सी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। यस परीक जी, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आई विल जस्ट समराइज नाउ। Is everyone ready for the example guys? So ये आपका okay great. So my next slide was about summary. So here you can see जब प्राइस एक लोअर लो बनाता है, एट द सेम टाइम जब आरएसआई एक हायर लो बनाता है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ बुलिश डाइवर्जेंस। और जब प्राइस एक हायर हाइज बनाता है एंड आरएसआई एक लोअर हाइज बनाता है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ बेरिश डाइवर्जेंस। सी अजय जी, अगर कुछ मार्केट में न्यूज आता है, सो यू ऑल्सो नो दैट at this point of time we can rely on technicals, but if there is any news that comes in overnight, all the technicals are going to go for a toss, and that is why whenever we trade we have to keep a stop loss. I mean, news is something that is not in our control, and when news comes in, you know, all your levels, all your support resistance and all your indicators you know, goes for a toss here. अलिक जी सेइंग बेरिश डाइवर्जेंस इज नॉट क्लियर। अलिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी के चार्ट में, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस फिर से ऊपर गया। ये जो सेकंड हाई है दैट इज हायर देन द फर्स्ट हाई। सो व्हेन आई कनेक्ट द टू हाई पॉइंट्स हियर, द प्राइस हैज मेड अ हायर हाई। अब जब प्राइस ने हायर हाई बनाया है तो आइडियली होना चाहिए कि आरएसआई भी आपका हायर हाई बनाए यहाँ पे, बट आप देख रहे हो आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने एक हाई बनाया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, बट द सेकंड हाई वाज लोअर देन द फर्स्ट हाई यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे सेकंड हाई वाज हायर देन द फर्स्ट हाई, हियर द सेकंड हाई वाज लोअर देन द फर्स्ट हाई। तो प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, बट आरएसआई जा रहा है आपकी साउथ की तरफ। तो ये हो गया आपका बेरिश डाइवर्जेंस। अलिक जी, इज द बेरिश डाइवर्जेंस पार्ट क्लियर नाउ? Not really required, Smriti ji. You can avoid MA. You can just focus on the divergence part as well. Usually MA वो crossover के लिए देखते हैं कि वहाँ पे bearish crossover हुआ है या bullish crossover हुआ है। Ideally divergence के साथ अगर आपको एक MA crossover भी मिला है, I mean that is also, you know, one thing that you can look at. But then वही हो जाएगा, जितना ज्यादा चीज अगर हम लोग वो देखेंगे तो फिर उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें बढ़ते जाएगा। द आइडिया इज योर कि डाइवर्जेंस से हमें एक सिग्नल का हिंट मिलता है, बट वील ऑल्सो यूज इट अलॉन्ग विद ट्रेंड लाइन टू कंफर्म कि ये रिवर्सल हुआ कि नहीं। और ये सब करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सल होगा ही, इसके लिए हम लोग एक चांस लेंगे, एक स्टॉप लॉस रखेंगे, एक टारगेट रखेंगे। ट्रेड हमारे फेवर में हुआ तो वील कम आउट प्रॉफिट विद अ प्रॉफिट। ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला गया डिस्पाइट ऑल द सिग्नल्स, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे।
सी देर आर मेनी सी अपार्ट फ्रॉम दैट आगे जाके सेशंस में ना मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम ऑप्शन चेन से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। सो एक वेबिनार उस पे भी मैं लेने वाला हूँ। फिर हम लोग देखेंगे कि पीसीआर भी हम कैसे देखते हैं, उसमें भी एक डाइवर्जेंस होता है। सो देयर इज गोइंग टू बी वन वेबिनार ऑन पीसीआर डाइवर्जेंस एज वेल। So for now, you can just focus on RSI divergence as well as the trend line breakouts and breakdowns. ठीक है? चलो, is everyone ready to test your knowledge, guys? If you all can let me know in the chat box. Is everyone ready? अभी शायद आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग को एक्चुअली में RSI का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। If you are getting the examples right, then I'm sure आपको समझ में आया है। Uh, yes. Chalo, let's see. So this is the example number 1. एंड यू कैन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको राइट आंसर्स ही होना चाहिए, कोशिश करो, इट्स ओके। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आई एम प्रेटी श्योर कि थोड़ा टाइम लगेगा ग्रास्प करने। यू कैन ऑल्सो रीविजिट द वेबिनार अगेन। ये जो सेशन है उसका जो रिकॉर्डिंग्स है दैट विल बी अवेलेबल ऑन आवर एसबीआई सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल, तो आप वहां पे बाद में भी देख सकते हो आराम से। ठीक है, चलो। सो दिस इज Mahindra and Mahindra 5 minutes chart in front of you guys. So I want you all to look at the chart carefully first, and then tell me. I want you to give me a time period where there is a divergence signal plus your entry. So this is your example 1. So this is Mahindra and Mahindra 5 minutes chart. So ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका प्राइस चार्ट है, नीचे की तरफ आपका आरएसआई है। आरएसआई 70 and 30 is marked here. So you have to tell me कौन से टाइम पे आपको एक डाइवर्जेंस सिग्नल मिला है और आपका एंट्री कौन से लेवल पर है यहाँ पे, एट वेयर इज इट is that you will enter in this stock here. First you have to tell me the divergence signal. Smriti ji is saying in the middle there is divergence. Okay. Ramnik ji is saying bearish divergence. Okay, interesting. What about others, guys? I want everyone to participate. So there are 3 examples. This is example number 1. Let's see how many of you all can spot it, because live market में आपको ऐसे ही charts मिलेंगे। सिद्धार्थ जी सिंह बुलिश डाइवर्जेंस। सिद्धार्थ जी बुलिश डाइवर्जेंस तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप आगे के चले गए। ओके ओके, आर लुकिंग एट द बुलिश डाइवर्जेंस अहेड। ठीक है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज एक वन वो स्पाइक आके फिर वो वहां से चला गया है यहाँ पे। स्मृति जी सेइंग एंट्री वेयर देयर इज अ गैप। यस, एब्सोल्युटली, देयर इज अ बिग गैप। यस। सतीश जी सेइंग नाउ इट्स कंफ्यूजिंग। ओके, I think concept एकदम आ गया, but now when it comes to looking at the live charts, bearish divergence in between, no dive. Parik ji saying no divergence in the chart. Okay, interesting. Parik ji saying no divergence in the chart. Dinesh ji saying bearish divergence. Yes, last also there is a bullish divergence here. Also broke the trend line. Yes, it has. Guys, look at where 21 is at the bottom. Look at around 21 Feb, guys. Just see between 20 and 21. Okay, क्योंकि ये first chart है, I'll also give you an hint. See between 20 and 21 Feb, guys. Now see if you are able to spot a divergence. नहीं, this is an historical chart. This is around February का chart, अभिषेक जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये historical chart है। See if you are able to spot any divergence between 20 and 21. So I'm giving you all time so that आप आराम से देख के you give me an answer. And it's okay. Wrong answers are completely fine, guys. Nobody is going to judge you for your wrong answers, because यहाँ पे हम सीखने ही आए हैं. And the more you look at these divergence, the more you see this in the live market, and the more you practice, and the more you train your eyes, the better you get. I think technical analysis is all about that, is how you train your eyes to spot these signals. Okay, fine. How many of you all got this, guys? Now I have marked the divergence on the screen. So I think Smriti ji and almost Dinesh ji, Satish ji को अब तक नहीं आया. I think Alik ji bullish divergence नहीं.
How many of you all were able to spot Ramnik ji? Yes. How many of you all were able to spot this bearish divergence, guys? So here you can clearly see price एक तेजी से rally किया था. Price ने एक high बनाया, then there is a new high, then there is a new high, then there is a new high, then there is a new high. You can see the price was making higher highs here. But at the same time, see how the price यहाँ पे 70 के ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया. You can see how RSI was making lower highs, whereas the price was making higher highs. और जितना ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करता है ना, उतना ज्यादा आपका सिग्नल स्ट्रॉन्ग बनता है. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, the more times it goes up, that means you can see the price is just trying to go above here. But at the same time, RSI is revealing something. At the same time, when you connect the lows here, you can see एक 45 डिग्री एकदम स्टीप वाला ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए. इट हैज टू बी एक 45 डिग्री स्लैंटिंग में आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन. जैसे इस दिन गैप डाउन हुआ, यू कैन सी देयर वाज ओनली अ वन वे फॉल इन महिंद्रा एंड महिंद्रा योर. बट हर टाइम आपको ऐसा फॉल नहीं मिलेगा. ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें ऐसा फॉल आया था. हो सकता है फॉल कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, नीचे आके फिर से रीटेस्ट देके फिर से ऐसे भी आए. ये एग्जांपल में ऐसा है कि ये फॉल ऐसा है, बट नॉट एवरी टाइम व्हेनेवर यू सी अ डाइवर्जेंस प्लस ट्रेंड लाइन यू विल गेट दिस फॉल योर. नहीं तो फिर आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर आपने तो ऐसा ऐसा एग्जांपल दिखाया था कि हर टाइम ऐसे ही फॉल होता है. ऐसा नहीं है. समटाइम्स यू विल गेट इट इफ द लक इज इन योर फेवर. आई मीन आपका दिन अच्छा है तो शायद ऐसा फॉल भी मिल जाए. दिन खराब हो तो इतना सब सिग्नल्स मिलने के बाद भी प्राइस ऊपर ही जाए, मतलब बेरिश डाइवर्जेंस मिलने के बाद ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल नंबर 1. we'll look at abhi ji, we'll also look at nifty's chart also then. ठीक है. Example number 2, guys. So this is the chart of BDL, that is Bharat Dynamics Limited, defense stocks. So defense stocks have been in the news for the last 2 days now. तो एक आई थिंक आज तो प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में. But how many of you all can spot a divergence here? Now in this chart, I'm not going to tell you whether there is a bullish divergence or a bearish divergence. Let's see how many of you all can spot a divergence here in Bharat Dynamics Limited. Again, this is a 5 minutes chart. Rectangle. Nikhil ji, I think you've just joined the session. So here you can see the price has made higher highs while the RSI has made lower highs here. Okay, so this is example number 2, guys. Ramnik ji is saying bearish divergence. क्या बात है Ramnik ji? I think Ramnik ji has got a bearish divergence. Very good, superb. By at what point? Smriti ji is saying date 28/10. Okay, very good. I think Smriti ji को भी bearish divergence मिला है यहाँ पे. DNA of Finance is saying bearish. I think everyone is saying bearish divergence, but अब तक किसी ने bullish divergence मिला नहीं है किसी को. I think ये example में मैंने bullish divergence ही रखा था यहाँ पे. अच्छा, now Dinesh ji is saying bullish divergence at 10. Okay, 10. 10 तो नहीं है यहाँ. अच्छा, you are taking 25 के बाद वाला 10. Is that what you are saying, Dinesh ji? यहाँ पे 11-1. Interesting. Anyone with bullish divergence here? यहाँ पे किसी को bullish divergence नहीं दिख रहा है. जिसको bearish divergence दिखा वो perfect है. I mean, you all are not wrong. But for the ones who have got bearish divergence, see if you are able to spot a bullish divergence as well. मतलब एक छोटा सा bullish divergence है. Smriti ji is saying after 25. Absolutely. Yes, Dinesh ji. Yes. After 28, yes, this one. So the one that I marked here, guys, यहाँ पे आप देख सकते हो. The price was making lower lows, where at the same time RSI was making higher lows here. And here you can see एक trend line breakout भी मिला यहाँ पर. जैसे आपको breakout मिला, the price started moving up from here. So this is a case of bullish divergence. Also for the ones who got this, I think you were saying about this, right? Where the price was making higher highs and the RSI was making lower highs here, and then there was this trend line breakdown. I think a lot of you all who pointed out the bearish divergence here, I think this is the bearish divergence that you all were mentioning. Dinesh ji, ये वाला देखा आपने, आपको bearish divergence मिला यहाँ पे, but see the fall was not as sharp as what we saw in Mahindra and Mahindra. थोड़ा fall आ गया यहाँ पे and the price started moving up again. So you can see now. So now you have seen bearish divergence में a case where the price has fallen sharply
And also a case where the price fell, but then it recovered also from there. Yes. रिनेश जी इज एक इमोजी भेजा है यहाँ पे रिनेश जी ने. आई थिंक रिनेश जी को नहीं आया ये. No problem. Okay, let's look at the last chart here, guys. I think this is the easiest chart that you will ever get. Guys, Hind Petro 5 minutes chart. Let's see how many of y'all can spot a divergence. ये तो आप लोग को डाइवर्जेंस आना ही चाहिए यहाँ पे हिंद पेट्रो के चार्ट पे. So this is the 5 minutes chart of Hind Petro. आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर डाइवर्जेंस शायद आपको दिखे ही नहीं. आई अंडरस्टैंड फर्स्ट वाला इजी था, सेकंड वाज क्वाइट ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस, बट आई थिंक दिस Hind Petro 5 minutes chart, I think this divergence is pretty much clear. Let me know, guys, where do you see a divergence यहाँ पे? In I think next webinar, next Wednesday again, we'll be revisiting the same concept again. Now, along with divergence and trend line, I'll also add one more indicator to your confirmation, which will be option chain. वहाँ पे हम लोग इंडेक्स का एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं. तो आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट कैसे ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन, वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ जाएगा. It seems all good. Yes, Priti ji. Dinesh ji saying bearish divergence after 22. Yes, perfect. 23rd. Yes, superb. वो वाला बुलिश डाइवर्जेंस है 23rd के बाद जो 1100 है. Yes, so this is the divergence that I was talking about, guys. So how many of you all got this divergence? So here you can see the price was making higher highs. There was this big trend line. यहाँ पे आप देखो there was this congestion around this trend line period. So RSI was making lower highs. And finally एक बड़ा सा रेड कैंडल जब बना, so this was an indication कि शायद अब ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है. And chances are that the price can go down from here. So that's how see, अगर आप ये वाला bullish divergence देख रहे हो, for example here you can see the price has made lower lows where the RSI has made higher lows. Can I say this is also a case of a bullish divergence here? But if I connect the trend line, you can see the trend line will be steeper. मतलब अगर मैं ऐसे trend line खींचूं इसको, तो एकदम से स्टीप वाला ट्रेंड लाइन हो जाएगा. सो लाइक आई सेड, यू नीड अ 45 डिग्री एंगल वाला ट्रेंड लाइन. आई थिंक दैट इज द थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट. इज दैट क्लियर, गाइज? आई होप यू ऑल गॉट दिस. ठीक है. आई थिंक somebody had mentioned निफ्टी का डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस है क्या? सो लेट मी लुक एट निफ्टी. आई विल गो लुक एट द डेली चार्ट. हाँ, interesting. So let me just erase this. Okay. Guys, any divergence signal on Nifty's daily chart? How much time frame we should take? मतलब I didn't get your Ramnik ji. I mean, you're saying analysis कौन से time frame पे कि divergence का क्या distance होना चाहिए time frame का? That is what you are talking about. See, anyway, see, not these strategies are not 100% foolproof, Dinesh ji. That is why the more the confirmation tools that you use, that is how you develop more conviction. And any trade that you take, it has to be with your stop loss and targets. But see, divergence hints at a reversal. Then trend line breakout and breakdown, they are like textbook ways of identifying reversal points here. सी मतलब दिखना चाहिए रवनीक जी, ऐसा नहीं एकदम बाजू बाजू में नहीं होना चाहिए. आई कांट पुट अ स्पेसिफिक नंबर की क्या होना चाहिए, बट दैट शुड बी विजिबल. यू हैव टू विजिबली सी व्हाट अ डाइवर्जेंस इज. क्लियर? ओके. इफ आई हैव टू आई थिंक निफ्टी में नहीं है डाइवर्जेंस. देखो यहाँ पे प्राइस एक हायर हाई बना रहा है, बट अगर आप देख रहे हो एक हायर हाई है, एक लोअर हाई है, बट अगेन अगर मैं ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट करूं, इट विल बी अ वेरी स्टीप ट्रेंड लाइन. दिस इज व्हाट ये वाला स्टीप वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको अवॉइड करना है. बेरिश डाइवर्जेंस है दिनेश जी, but this is a very steep trend line here, so ideally I would try to avoid it. So I was just looking at Mahanagar Gas का 5 minutes chart. So I look at Mahanagar Gas. So if I see Mahanagar Gas here, अगर आप देखोगे, look at this point here, guys. यहाँ पे आप देखो, the price was making higher highs. You can see the RSI was making lower highs, and here you can see there was this trend line here. Can you all see this?
एकदम ये परफेक्ट है। आप प्राइस एक हायर हाइस बन रहा है, आपको दिख रहा है कि प्राइस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, बट यू कैन सी दैट द आरएसआई इज गोइंग डाउन। यहाँ पे आप देखो एक 45 डिग्री एंगल का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, कंसोलिडेट किया, एंड फ्रॉम देयर महानगर गैस वेंट डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट। सो दिस इज अ क्लासिक वे ऑफ स्पॉटिंग आरएसआई एग्जैक्टली। वो ट्रेंड लाइन ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नहीं तो आरएसआई डाइवर्जेंस आपका फ्लॉप हो सकता है। So for example, here also, if you see here, the price was making lower lows. Here you can see that RSI was making higher lows. Then here you can see thoda sa steep hai, but here you can see a angle hai. Price was making lower lows, RSI was making higher lows. यहाँ पे trend line breakout हुआ, जैसे ही breakout हुआ, the price started to move up from here. So this is a case of a bullish divergence. And now my question is, आपको divergence कहाँ पे देखना है? So what you can do is you can create some basic scanners, as in जो भी stocks है जिसका 5 minutes में RSI 70 के ऊपर गया है, तो आप वैसे stocks में bearish divergence की खोज कर सकते हो। या कोई स्टॉक आरएसआई 30 के नीचे गया, तो वैसे स्टॉक्स पे यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर, सो दैट ऐसा नहीं कि आप सारे स्टॉक्स पे ढूंढने बैठे। You can focus only on those stocks where the RSI is above 70 for bearish divergence and below 30 for bullish divergence. And you can have a watch list that is created, and you can just keep monitoring those stocks for a potential divergence signals. Is that part clear, guys? I hope. See, दो there can be two things, रमनिक जी। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कभी कभी स्टॉक वन वे मूव होता है, या कभी कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक होके थोड़ा सा रिटेस्ट लेके फिर नीचे आता है। सो थोड़ा सा जजमेंट आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होके अगर मोमेंटम में है तो आप चढ़ जाओ, अगर वो थोड़ा सा झिझक द प्राइस इज hovering around that range, so wait for some time before the momentum starts coming up in the stock again. HUL, there is a big divergence on a monthly chart. Okay, I'll look at monthly chart as well. Yes, very good, Smriti ji. Yes, so here you can see, I think Smriti ji has mentioned here, अगर आप देखोगे मंथली चार्ट में HUL काफी कोशिश कर रहा है ऊपर, और आप देख रहे हो आरएसआई कब से एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, एंड ऑल्सो द ट्रेंड लाइन इट ऑल्सो इंडिकेटिंग। ये देखो अभी ये एक अच्छा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इफ वी सी ऑन अ मंथली चार्ट, द मोमेंट दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, गाइस, chances are that we might see some selling pressure kicking in Hindustan Unilever. Matlab price has, can clearly see exhaustion in the price here, and RSI has been moving down. It's just that यहाँ पे डाइवर्जेंस का सिग्नल है, बट देखो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेट फॉर द ट्रेंड लाइन टू ब्रेक एंड ओनली देन यू एंटर इनटू दैट स्टॉक। सी आपको रेडीमेड डाइवर्जेंस नहीं मिलेगा मूर्ति जी, यू कैन ओनली यूज सम बेसिक स्कैनर्स, आरएसआई अबव 70, आरएसआई बिलो 30। Ideally, yes, if it breaks the trend line, we ideally, based on what we discussed today, Smriti ji, I think ये नीचे जाना चाहिए। ठीक है, and your stop loss will be just above the trend line, because once it breaks the trend line, you don't want the price to go above trend line again, and then you keep trailing your stop losses. Clear? Sure. So that's all from my end, guys. I hope today's session was informative. I hope it was practical. तो पहले आपको मैंने concept समझाया, then I showed you the examples as well. नहीं, so exits can be based on आपका जो risk है, you can look for 1:2, or ideally the best, I mean what I do is, एक बार मैंने stop loss define हो गया, I keep trailing my SL, guys, so that I don't exit quickly. तो मैं मेरे stop loss को नीचे 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 या ऊपर 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 लेके जाता हूँ until एक रिवर्सल आके और stop loss को ले लेता है। बट मिनिमम 1:2, आपका रिस्क 5 है तो 10 पॉइंट, रिस्क 10 है तो 20 पॉइंट, आई मीन दैट इज आइडियली व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग। ठीक है, आई होप टुडेज सेशन वाज गुड, गाइस। आई होप इट वाज informative. Similarly, next week we are again going to meet on Wednesday from 4 to 5. And next week I'm going to share a similar strategy for index, guys, especially for Nifty and Sensex, using the same concept, RSI divergence. So we'll be brushing up the RSI divergence concept. We'll be looking at trend lines, and we'll be also looking at option chain. एक extra confirmation भी आप कैसे देख सकते हो, but that is particularly for index as well. ठीक है, so that's all from my end, guys. I hope you all for the ones who want to revisit this, you can go to SBI Securities YouTube channel and you can find the videos there.
And see you soon, guys. So next Wednesday again we'll meet at 4 o'clock. And until then, we have 2 more trading days. Have a good profitable trading day, guys, and have a good weekend. And I'll see you all next week with the new set of topics. Bye, guys. Take care and stay safe. Nilesh ji, I'll cover that in one of the webinars. I'll talk about what hidden divergence is. Smriti ji, karte, we'll discuss in one of the sessions again on this. Very, very informative. Thank you so much, Dinesh ji. Thank you so much, Girish ji. See you all soon.